मैं ना उनमें से हूँ जो लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, until I have exhausted every possible excuse for their behavior. सुनने में बड़ा harmless लगता है ना? Being patient, being understanding, not judging people too quickly. But here's what nobody tells you about giving people too many chances. By the time you finally accept what they are, they've already done a lot of damage. So today, I am sharing the signs I should have seen earlier, the red flags I kept painting green. If even one of these sounds familiar to you, stay till the end. This one is going to hit. The first sign I kept ignoring, the pattern of when they showed up. जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मस्त चल रहा था, no calls, no messages, just silence. But suddenly, when they needed something from me, a favor, an update on my life, I was their closest friend. They would be like, "Hey, where have you been? How have you been?" And I would fall for it every single time. Because when someone reaches out to you, your first instinct is to feel wanted. You want your friends to care about you. But when someone reaches out only when they need something, you're not a friend to them. You are a resource. I had to learn this the hard way. I used to think maybe they're just busy. But here's the thing, busy people still check in. Busy people still make an effort for the people they care about. The second sign, and this one should have been obvious, but I was way too trusting to see it. If someone sits with you and tears apart every person who just left the room, what do you think they are doing when you leave the room? मैं पहले सोचा करती थी कि यू नो मेरे साथ तो एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट, बट नो, आई वॉज जस्ट द ऑडियंस दैट डे. टुमारो आई वुड बी द टॉपिक. एंड वही हुआ भी. जो बातें वो दूसरों के बारे में मुझसे आकर कह रहे थे, आज वो सेम चीज़ें मेरे बारे में दूसरों को कह रहे हैं. एंड जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है ना, इट इज़ नॉट इवन वट दे सेड, इट वॉज द कावर्डिस. मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे आकर कहो ना. आई कैन हैंडल एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन. बट टू माई फेस everything was fine, everything was just a joke. So here's the thing that I follow now. अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है कंटिन्यूअसली when they are not present in the room, आपको क्या लगता है वो इंसान किसी के लिए भी लॉयल है? नो, दे आर नॉट लॉयल टू एनी वन. द थर्ड साइन, दिस वन इज पर्सनल बिकॉज दिस वन मेस्ड विद माई हेड द मोस्ट. वो कुछ उस टाइप के लोग नहीं होते हैं जो आपको कुछ जेन्युइनली हर्टफुल बोलेंगे, लाइक अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर अपीयरेंसेस, अबाउट योर चॉइसेस. एंड इफ यू रिएक्ट, दे वुड से, ओ मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी. अब क्या दोस्त भी मजाक नहीं कर सकते? एंड you are left standing there confused because it did not feel like a joke to you. It felt like a punch wrapped in a laugh. But if you react, you are overreacting. Suddenly, people start looking at you like you are the dramatic one, and the person who said it gets away with it completely. So, here's the thing I follow now. अगर किसी का जोक मुझे कॉन्स्टेंटली स्मॉल फील करा रहा है, देन इट इज़ नॉट अ जोक, it is a test. They are testing how far will I take it, how much can I actually take. And every time you laugh with them, you are telling them the answer is more. These kind of people, they feed on your silence. Don't give it to them, just don't. Because ऐसे लोगों को
पता ही नहीं होता है कि इसके आगे क्या करना है when you say no to them. Sign 4, and this is the biggest one for me. The people I'm talking about, they never ever came to my face with a problem. If they had a problem with me, I would hear about it from someone else. Weeks later, through the grapevine, जब वो 4-5 लोगों से होकर गुजरता और वो ट्विस्टेड एग्जैजरेटेड फॉर्म में मुझ तक पहुंचता, तब मुझे जाके मालूम चलता कि ओके इनको ये प्रॉब्लम है मुझसे. एंड दिस इज नॉट इवन व्हाट हर्ट मी द मोस्ट, इट वाज द cowardice. You have a problem with me? Tell me. Sit across from me and say it. I can handle an honest conversation. But what I can't handle is someone smiling at me and making people believe a different version of me which does not even exist. इनिशियली ना मैं ये सारा फ्रस्ट्रेशन खुद के अंदर रखती थी. आई डिड नॉट इवन कन्फ्रंट देम बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को लगता था कि इसका फ़ायदा भी क्या है, क्या करेंगे वो, दे विल गैसलाइट मी, मेरे ही ऊपर घुमा देंगे वो बातें, सब मेरे अगेंस्ट ही करेंगे वो चीज़ें. सो आई डिड द ओनली थिंग दैट फेल्ट ऑनेस्ट टू मी. आई वॉकड अवे साइलेंटली. कोई ड्रामा नहीं, कोई बिग कन्फ्रंटेशन नहीं, नथिंग. आई सिंपली वॉकड अवे and my silence said everything that I needed to say. No words required. And the last sign we all ignore the longest. That feeling in your gut. We all know that feeling. That quiet discomfort after spending time with someone. That feeling of being drained instead of energized. The way you replay conversations in your head, thinking, did they mean that? Your instincts are smarter than you think. आपका गट आपको पहले ही बताता है जब कुछ ऐसा हो रहा होता है. इट्स जस्ट वी टेक आवर टाइम, क्योंकि कभी कभी ना उस फीलिंग को एक्सेप्ट करने का मतलब है टू लूज पीपल इन योर लाइफ. एंड कभी कभी फेक फ्रेंडशिप भी बेटर लगती है, यू नो, इंस्टेड ऑफ हैविंग नो फ्रेंडशिप एट ऑल. बट ऐसे फ्रेंडशिप का कोई मीनिंग नहीं होता है, इट्स यूजलेस. सो इट्स बेटर टू वॉक अवे. ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग. इसको नज़रअंदाज नहीं करने का है. लुक, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कट एवरी वन ऑफ या हर दूसरे पे शक करो. वट आई एम सेइंग इज pay attention, not to what people say to you or about you, but to how they make you feel. Pay attention not to their words, but to their pattern. And if you have been sitting here recognizing every single sign which I just shared, you already know what you need to do. You've known for a while. You just need permission. So here it is. Walk away from people who don't treat you right, even if it is quiet, even if nobody else understands. You know, that is enough. Tell me in the comments, which sign did you recognize the most? I want to hear your story too. And if this hit home, subscribe. I talk about this stuff every week. Real stories, no sugarcoating. So see you in the next one. Thank you.